Thank you. So I think you all have the data which I have shared yesterday, right? So first thing which we are going to do is we are going to import the data in the application, right? So let me just brief you about this data. So the data set is from the World Bank, right? Collected as a part of pilot study on the feasibility of crowdsourced price data collection. Price data was collected by non-professional for 30 specific food items across several months in 8 countries, right? This Excel file contains geographic data, city and country, time data, data of observation, product information, and price. All right. So please go through the data file which I have shared you yesterday. So there were two files which I have shared. First one is a small one, and second one is the complete data. Right. If you are facing any challenge with the big file, please use the small file which contains less number of rows. Okay, so let's import the data first in the machine. Okay, so how you will import? Go to file, or that go to data, press new data source, click on Microsoft Excel and select your Excel file. Okay, now is it better? Okay. Okay. So click on data, click on new data source, click on Microsoft Excel, and then select the file and click on open. It will take some time to load the file, right? Once that is loaded, you will see this sheet. Once your data is loaded, आकाश क्या शो नहीं हो रही फाइल? Okay,
तो फाइल आपके CSV के अंदर है, इसलिए वो शो नहीं हो रही। तो फाइल को, जो मैंने सेकंड फाइल शेयर की, जो बड़ी वाली फाइल है, वो शायद एक्सेल में है। और आपके डेस्कटॉप में तो वो यही होगा ना आकाश। आप आप क्या करो, CSV फाइल को एक्सेल के थ्रू रीड कर रहे हो, तो आप तो वो वाला यूज कर रहे हो ना डेस्कटॉप, उसमें CSV का भी ऑप्शन होगा, एक बार देखना। जैसे मेरे पास एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है ना, वैसे आपका CSV का ऑप्शन आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है देन प्रोबेबली देयर मस्ट बी सम। डेस्कटॉप में CSV का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक हुआ? अगर नहीं हो पा रहा है तो उस फाइल को ओपन करो, जो आपके CSV वाली फाइल है। चलो बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस ही करके बता देता हूँ। आप ये वाली फाइल ओपन करो जिस 26 KB की है, राइट? ये बाइनरी फॉर्म में है। उसको ओपन करने के बाद फाइल पे क्लिक करना, सेव एज करना, राइट? और सेव एज में नीचे आकर के एक्सेल बाइनरी वर्कबुक है, उसको चेंज करके एक्सेल वर्कबुक कर देना। ये चेंज करना है आपने। बाकी लोग प्लीज, डेटा इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ? कनिष्का, मोहित, नवीन।
साथ साथ करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू, प्रमित, कोई एरर आया तो वो बताओ, अगर हो गया था ईमेल पे। किसी को बोलो, और अब ग्रुप में किसी को बोलो, वो फॉरवर्ड कर देंगे आपको। और once you import the file, right, प्रमित मिल गया फाइल, इंदू, ओके। सो आई एम थिंक इंदू तक मेरी बात आवाज जा नहीं रही। लेट मी कंटिन्यू। So what all you can do with this data? So you can do a lot of things like renaming your variable. So for example, location name, just change it to city, right? You can create alias to this name, any of the member, right? And the another thing which you can split the data, right? So once you split it, it will split it by default delimiter or default separator, which is space, right? Let me delete this. Or you can do custom split. Space, right? And this custom split, you can use the separate. So these are the different separator which you can use, like hyphen, comma, semicolon, colon, dot, and you can split the first, only the first value, only the last value, or all the values. तो अगर 5 इंस्टेंसेस है, मान लो आपके डेटा के अंदर, फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, यहाँ पर लिखा था अलीपुर कॉमा खिचड़ीपुर कॉमा खानपुर. So there are two instances of commas. So if you do the custom split and you will type comma over here and split of first, तो पहले इंस्टेंस पे यानी कि अलीपुर स्प्लिट हो जाएगा एक जगह पे, बाकी दोनों दूसरी जगह पे चले जाएंगे. अगर लास्ट में करोगे
तो खानपुर स्प्लिट हो जाएगा, बाकी स्टार्टिंग के दोनों एक साथ रहेंगे, और ऑल करोगे तो 3 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा डेटा आपका। ये क्लियर है? So if you want to do it, you can do it right now. All right. Now, if you click on sheet 1, in your case, this should be sheet 1, right? So you can see your table. These are known as dimension, and these column are known as measures. So अगर मैं बोलूँ तो दो डेटा, टेबलू के अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्प्लिट हो जाता है, दो डेटा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एक बन जाता है मेजर, दूसरा हो जाता है डायमेंशन। राइट, एंड डायमेंशन में क्या रहेगा, जनरली इट विल कंटेन योर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा, एंड मेजर में क्या होगा, इट विल बी containing only numerical data. All right. So this is your data field, right, which contain your dimension and measures. These are the page filters. These are the markers. So dimension, measures, page filter, the variable you want to put into column, the variable you want to put into rows. This is known as your canvas. Drag in where you plot the graph. If you click on show me, the available data viz when you click on any of the variable on the left hand side, a visualization will automatically be recommended by highlighting it. पे क्लिक करके देखो कौन कौन से ग्राफ हाईलाइट हो रहे हैं।
एक बार ट्राई करके देखो खुद से, अभी सिलेक्ट मत करना, बस जस्ट विजुअलाइजेशन, जो कि आपने ऑलरेडी कर चुके, आप कर चुके होंगे अपने आप ट्राई, राइट? नाउ ब्रिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइक दिस। सो इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है। ड्रैग कंट्री फ्रॉम द डेटा विंडो टू द कैनवस। So let me do it for you. I am back. Sorry, there was a small disruption in my internet connection, so you must have seen that my screen is freeze, right? All right, so now select latitude and drop it into row. Select longitude, drop it into column. Now this graph will be automatically
picked up from there. Right now, what all countries are available in your data? If you want to see that, simply drag this option and put it on the graph. So these countries which are there in your data is highlighted through the dots, right? And you see that country is automatically appeared in marks cell. I think there was some question. Let me check what was the question. Okay. Let me just increase it, right? तो अभी क्या दिख रहा है? Country, right? Now if there is a state, it can also pick up the state. Now bring city on the map and drop country and put this into color. So longitude, latitude जो data है that only contains my longitude and latitude of the country, right? If it contains longitude and latitude for a state, definitely that can also be plotted in this graph. Size increase कर देते अपने. By hovering over it, you can see it. By checking it into legend, you can check it which color represents which country. Now I have a question like, which country has the most expensive average price? So what you can do, just simply bring this observed price right, and put it into color. And in place of sum, change it to average. Okay, this is because of one null value. Give me a second, seems to be some due to latency. Again, latitude, longitude,
of the price and in measure bring average and bring country as well. This should fill this. Why it is not filling? Let me just check. आप लोगों का किसी फिल मैप फिल हो गया है? So your average price should fill the particular area. किसी का है कलर फिल हो करके? Or it is only picking up one variable at a time, right? Earlier it used to pick up two, right? Like this. So let me do one thing. Let me bring this into so there seems to be some null value. तो null है क्या एक्सेल के अंदर? गिव मी सेकंड, मुझे एक्सेल जरा चेक करने दो एक बार.
फिल हो रहा है ना आपका दोनों के साथ, मेरे साथ एरर क्यों आ रही है? मैं ये so ideally it should fill this, right? किसी का ये फिल आ रहा है अगर मैं ये ड्रॉप कर रहा हूँ कलर में? आर यू गाइस गेटिंग? यस, नो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके, सॉरी मैं एक्चुअली चैट नीचे नहीं देख पाया आप लोगों की। आ रहा है, शो कर रहा है सर, हो गया। नो नो, कलर नहीं आ रहा, राइट? कलर नहीं में नहीं हो रहा है। ओके, फाइन, सो व्हाट वी कैन डू, let me remove this, let me bring this. Right. So this graph will come as filled graph, right? The second one, it comes with longitude and latitude. The moment you try to bring some measure to this, it will show you that you can use this graph. So let's put it some over here and change color. Right. So on the basis of observed price, it has given the color. Now if you want to format this, you can click on filter format. You can change the alignment, font, right? Total, grand totals, and is there any special value? So this is again showing you, once you hover it, this is Brazil, and the average observed price for this country is 2.460. So this will help me answer the question, which country has highest average price? 3.63, 2.6, जैसे जैसे कलर डार्क होता जा रहा है
1.756, तो इंडिया का उससे राइट है, पाकिस्तान और भी सस्ता है। एंड विद द विजुअल यू कैन सी हाउ a price for a particular, the average price in a country comparatively is higher or lesser amongst the group which we have selected. तो जो मेरे पास डेटा उसके अंदर किस कंट्री को के अंदर जो मेरा वर्ल्ड जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था प्राइस के ऊपर, उनका एवरेज प्राइस ओवर अदर कंट्री कैसा है। तो अगर मेरे को ये कंपेयर करना हो विच कंट्री इज कॉस्टली, तो नाइजीरिया वेरी कॉस्टली कंपेयर टू पाकिस्तान, कंपेयर टू कीनिया, राइट। सो द क्वेश्चन वाज, तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका, सो विच कंट्री हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस। Right, and if you want this number to be displayed, click on T, जो आपने फॉर्मेटिंग की थी नंबर की, तो font, let's make it black, right? So by clicking on this you can display your labels. So this has answered your question, which country has the highest average price, right? Now so rather clearing your sheet, open another sheet. Follow this instruction, clear the sheet, double click on country to plot the map, drag country from the data window to color shell. So double click on the country, right, drag country from data window to color shell, country to color shell, right. Select the drop down the marks card and change from automatic to map. Sorry, so this automatic to map. Now next question. If you want to analyze the variation, what visualization type makes the most sense? So my question is, how much variation is there in product price per country? So always remember, जब भी हम visualization बनाते हैं, तो we have a question which we want to answer through the visualization. So my question is, how much variation is there in product price per country? Now how you will decide which chart type to use?
We will use bar chart. Now what do you do? Holding down the control key command on Mac, click to select the field product name and price. Product name and of the price. Do you see the recommended chart itself is coming as bar graph? Now for the instruction, select the horizontal bar chart and click the show me tab again to close it. Okay. Double click on the sum price, fill on the column shelf, change the aggregation from sum to median by replacing sum with median. तो क्या करना है? अब median price करना है जो कि sum है. Change the aggregation from sum to median. Now hover over the word median price on the x-axis until the sort icon appears. तो अब क्या करना है? ठीक है. So this icon, so this is sorting. ये icon दिख रहा है सबको? Once you click on it, your data will be sorted in descending order. For the product with median price. Now you have the answer to this question. Okay, this small icon जहाँ मेरा अभी माउस का कर्सर है, so the moment you click in, the moment you click in, the moment you click in, there are three different options which you will get. So सबसे मीडियन प्राइस हाईएस्ट किसका है? सिम्स का, बीफ का. सबसे सस्ता मीडियम प्राइस किसका है? कुकिंग सॉल्ट का. डन हो गया, ये सॉर्टिंग हो गया यहाँ से. Alright, so the next question which we need to answer is, so now right click on the sheet tab and rename the sheet with price variation by country. प्राइस वेरिएशन का कंट्री कहाँ से आया? कंट्री तो कहीं है ही नहीं. So we need to bring country as well in this sheet by bringing country into column.
तो अब आपको हर प्रोडक्ट के कंट्री वाइज प्राइस वेरिएशन नजर आने लगे। बनाया सबने? ऑलराइट, you can sort the product name like this. डन, सबका हो गया यहाँ तक? तो नाउ यू कैन सी द वेरिएंस। Do you see this line? Which is representing the median price. So now you can go to analytics pane. Now click on average line. Do you see median price here, average price here? For sunflower oil, for कॉर्नफ्लेक्स केलॉग्स के बांग्लादेश के अंदर ये रेट है विद, ये मीडियन प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है। Okay, so go to analytics pane, click on average line. It will show you the average price on the graph itself. Right, so this will give you a sense कि how the prices are faring. Yes. So sorry, Pramit, I think your interpretation might be wrong. So let me just explain it. So जो average price, जो average जो ये line आई है, that is the average price. तो किसका average है? Price का. Across a different country. So इस country के average 1.65 है, ब्राजील का क्लिक लाइन पे हाँ 2.425 है. So how a particular product is faring. So मैं अगर ये बोलूं
कि एवरेज प्राइस से मीडियन प्राइस एप्पल का सस्ता है, यानी कि बांग्लादेश और ब्राजील में अगर दोनों के फर्क देखोगे तो और प्रोडक्ट के मुकाबले सेब महंगा बिकता है। क्या एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज प्राइस इस प्रोडक्ट का कंट्री की जो कंज्यूम आइटम है उनसे ज्यादा है। राइट, नाउ यू कैन गिव इट अ नेम। इस शीट का आप कोई टाइटल दे सकते हो, प्राइस वेरिएंस अक्रॉस कंट्रीज। Then okay, so what is the next question in front of us? Now if you want to put right, you want to change it, you can edit it, स्कोप एंटायर टेबल करना है तो ये पूरे टेबल का जो एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से लाइन आ गई आपके पास। राइट, एडिट, नाउ स्कोप एंटायर टेबल पर पेन मतलब हर कंट्री के हिसाब से एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन होना चाहिए। पर सेल पे इस तरह से आएगा। डू यू सी बैकग्राउंड में इसको पर सेल पे क्या है, तो मीडियन और एवरेज प्राइस का कंपैरिजन पर पेन। ओके, इसको कहां से ओपन किया, तो आकाश वंस यू क्लिक ऑन दिस, वंस यू सेलेक्ट दिस लाइन, राइट, इस तरह से दिस ऑप्शन विल पॉप अप, एडिट, देन यू कैन सेलेक्ट द स्कोप। तो ये पूरी टेबल का लूंगा तो एवरेज थोड़ा बढ़ जाएगा। पर पेन यानी हर कंट्री के हिसाब से लूंगा, जहां कम है जहां ज्यादा है वो उस हिसाब से आ जाएगा। तो एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन आप पूरे डेटा के बेसिस पे कर सकते हो, कंट्री के बेसिस पे लाइन प्लॉट कर सकते हो, आप हर सेल का अलग से कर सकते हो। That is a kind of granularity you can get in the Tableau. So now the next question, can you create a box plot of the data to see what quantities were looked at for each product? How might you best compare price for a single product across country? So क्या करना है, we need to check what all products are outlier in a particular country. ठीक है, so let me open a, so ये हो गया
variance across countries. Where to be specific, price varies across countries. Let me open another sheet. Okay, so किस कंट्री के अंदर प्राइस क्या चल रहा है, that we can see. So show me पे क्लिक करोगे, this will show you what all graphs you can build. एक second, right? So ये आ गया आपका ऑब्जर्व प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन. अब कंट्री को उठा के मैंने कहा डाला, राइट. अब सम किया क्या करना है मेरे को, एवरेज प्राइस किया एंड प्रोडक्ट नेम वाइज देखना है तो प्रोडक्ट नेम को फर्दर मैंने तो हर प्रोडक्ट का ऑब्जर्व प्राइस यहाँ पे प्लॉट है कंट्री वाइज. तो इफ यू होवर ओवर इट, सोयाबीन इंडिया के अंदर बहुत आउटलायर है. सोयाबीन कीनिया के अंदर ही बहुत बड़ी चीज है. सनफ्लावर ऑयल भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे सस्ती चीज है वो क्या है, कसावा. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. राइस वाइट ब्रोकन. कंपैरेटिवली प्राइस का प्राइस हमारा लोअर साइड है. ऑलराइट, this is how you can create बॉक्स प्लॉट. हो गया सबका, शो करूं फिर से. हाँ, ये हो गया सबका. Okay, so let's move on to some advanced stuff. Okay, so let's compare the country wise price. So let me bring some new stuff which is country ठीक है कर दूंगा, राइट.
and you have selected observation price. So what do you see over here कि हर कंट्री के हिसाब से आपके पास क्या आ गया, उस कंट्री का टोटल. Now make it a average price. Now second time you bring another same measure, and now you are changing this to max. So बांग्लादेश का मैक्सिमम प्राइस कितना है 5.054. यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस एवरेज प्राइस कितना है 1.828, right? Now if you bring or if you put country into color, if you put country in color, this will be more intuitive. तो आपको कंपेयर करने में आसान नहीं. Now you can swap your rows and column. By simply clicking on this icon. So if you see this, or to make more meaningful, you can simply click on the label icon. Now this is showing you what, ये देखो एवरेज मैक्सिमम प्राइस ब्राजील में ये है, बट एवरेज प्राइस कम है. So you can compare the difference between maximum price and the average price. Now to bring more granularity, right? So click on this. Now you want to bring more granularity, just simply click on, sorry, country. तो अभी जो मैं छोटा डेटा ले वहां तो ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, बट अगर बड़ा डेटा लोगे, बड़ा वाला शीट जो यूज करो तो ऐसे दिखेगा. बांग्लादेश के अंदर भी विद इन डिफरेंट सिटी हाउ द प्राइस आर मूविंग. और ग्रेनुलरिटी चाहिए, सिटी को भी कलर कोडेड कर दो. दिस हेल्प्स मी टू सॉर्ट माय विजुअलाइजेशन. तो अपने प्राइस के हिसाब से देखो विजुअलाइजेशन सॉर्ट भी हो रहा है. तो यहाँ पे विद इन बांग्लादेश सॉर्टिंग हो गई, कंट्री की सॉर्टिंग आप ए टू जी है, आपने उल्टी कर दी, तो अब ना जी टू ए. सिमिलरली यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो सिटी के अंदर.
Done. All right. So quickly, a few more graph, and then we will come to dashboard. So if you have to check the price, right? Sure, Kanishka, I will forward it. And so, do you see? You can see price over the years. Now, if you click on this plus icon, what will happen? It will show you the granularity at the quarter level. Now, if you click on this plus icon, this will show you the granularity at month level, day level. And if you want to remove year on year filter, you can remove that. You want to remove quarter, you can remove that. Month, you can remove, and then you have a day wise or date wise distribution. Now, if you also want to compare what is the average quantity we are selling over a year. So now quantity, जैसे से quantity change हो रही है वैसे से आपका price भी change हो रहा है. Okay. So again, this is an automatic variable. So this, Tableau does create, a hierarchical structure of your date. अब आप बोलोगे डेट में क्वार्टर वाटर तो नहीं था, so it will automatically calculate the quarter, the month, the day from your date, which is there in your data. Okay. Now you can further change it. Right? If you will bring some level. Now, the moment you bring some variable which is of no use, you can simply click on the small icon triangle and you can remove it. Right? You can keep trying with new variable. Does it make any difference? No. You can remove it. Like this. Just done.
So our graph is a little different because of the data, right? हमारे पास ये ग्राफ सेम जो मैंने आपको शीट शेयर की है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ छोटे डेटा पे दिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं वो डेटा अगर डिस्प्ले करता, क्योंकि जैसे हैवी फाइल जो कि मैं आपको बाद में शेयर की है, तो ये मेरे को ना थोड़ा लैग के साथ चलता। Now you have created your different visualization. Now what you need to create a dashboard. So you need to click on this new dashboard, right? And from a particular sheet, you can bring your visualization. Second graph, third graph, fourth graph. ये हटा देते हैं ना। Now if you bring another sheet, let's say we want to bring this. You can drag it. You can put it like this. So what do you mean by Akash dynamic? Now once your dashboard is ready, right? तो डैशबोर्ड क्या होता है? A single page view of your reports. फालतू की चीज हटा देता हूँ इसमें से। If you click on something, it will perform yes. So what you do, you need to first group करना पड़ेगा आपस में इनको। So for example, you click on Brazil over here and you want this to be changed. So there is the option of connecting them. Let me see. Okay. Where is the top one?
Okay, let me bring it again so that I can club them together. जो आप बोलो ना function वाली. What is this graph? पहले इसको लेके आते हैं. ये लेके आते हैं. Now, if you just want to click over here and you want to see, there's an option to club them together. Might be option. It simply slipped from my mind. Okay. Add phone layout phone dashboard. ठीक है. Run update, auto update. Okay. Sure. Okay. शीट के अंदर तो होता ही है, जैसे ना आपका डैशबोर्ड पे रुको देख लेता हूँ. जब हमने शीट पिक करी ना, शीट में अगर आपने दो ग्राफ एक साथ लिए हुए हैं, हाँ जी जी सर, यार डाल लेते हो या रिपोर्ट ली हुई है आपने ना, तो यहाँ तो जैसे फिल्टर है आपने. Okay. तो यहाँ से तो ये पॉसिबल है राइट, इस तरह से. अब ये देखना है दो ग्राफ को एक साथ कैसे कंबाइन किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. फर्स्ट वी नीड टू शेयर दिस. एक काम करते क्या देता, dashboard show dashboard title. Okay, sheet 1 view layout.
that okay, so we can go and we can seek help, right? So I go to help and we can go to Tableau committee how to club them together, right? And I can okay, so when you are saying that कि इनको साथ में club करना है ना, मैं उसके लिए वो सोच रहा था how we can club them together, तो एक साथ change नहीं हो रहे थे ना selection पे. तो देयर वाज ऑप्शन, वो ऑप्शन आता था जब मैं दोनों को सिलेक्ट करता था ना, वांट टू, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया कंट्रोल और कंट्रोल ये सिलेक्ट किया, तो अभी तो कंट्रोल के साथ चलाने में नहीं दे रहा है, शायद ये ऑप्शन है. यस, ये फिल्टर पर क्लिक करना था, सॉरी, ठीक है ना. जैसे आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसी कंट्री, जैसे अब ये हो गया क्लब, छोटा सा ऑप्शन था ये आइकन नहीं वाला, चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे ऊपर आता था ऑप्शन. तो दिस इज हाउ, जो आपको क्वेश्चन था ना आपका कि डायनेमिक डैशबोर्ड, तो ये डायनेमिक हो गया आपका. ठीक है. नाउ अब आपको और कैसे सीखना है टैबलू, राइट? तो बेसिकली टैबलू सारा खेल है कि कितना आप इस पे प्रैक्टिस करते हो. सो नाउ फाइल आपने सेव किया, ठीक है. व्हेन यू क्लिक ऑन सेव ऑन टैबलू पब्लिक, you need to log in and you can save it, right? And it will be stored on your profile, कि आपके प्रोफाइल पे जाकर के स्टोर होगा. अब इसके बाद आपको टैबलू के बारे में, राइट, अपनी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव करनी है, या आपको लगता है टैबलू और सीखना चाहिए या और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आई एम गोइंग टू शो यू द लर्निंग पाथ. ये सब हम चूज कर सकते हैं, राइट. कल जैसे मैंने आपको बताया था कि यू कैन चेक द विच ऑफ द डे. Similarly, you can go click on resource and click on learn, right? And click on getting started, and you just need to watch this video. That's it. This will summarize all the functionality which are available in Tableau. So it will a 25-minute video, right? It also gives you the data set on which you can try, right? And this will also tell you all the functionality which are there in Tableau. Pramit, you want to say something? I see that your speaker is on, so that's the reason. All right. Now, if you want to go into a particular portion, because calculations के बारे में study करना है, so there are small videos. Now, how to publish this dashboard? Tableau server पे आप इसको publish भी कर सकते हो, right? So you can go just to this server, publish to Tableau server, and once you click it, you will login मांगेगा, so let me just log in first. That was वो है शायद. Let me sign in. Tableau public है मेरे पास. Let me just log in.
So these are my previously used or previously created dashboard, which I can go now and check कि मैंने पहले क्या काम किया हुआ है, right? Similarly, you can save this file and it will be available over there. Okay, now click on file and save as. Password याद नहीं है, otherwise I could have saved. Let me just see. So if you save this, right, you will be able to see this over here. जैसे मेरे पास ये आ रहा है वैसे ही आपके पास भी ये आपके टेबल पब्लिक पे आ जाएगा. You can download this, you can edit this, you can do 10 different things with this. Okay, now coming back to the topic which I was just explaining, ki how to learn. So go to resource, right? And if you want to just learn how to publish, right? There's so many topics, right? So they are also giving you the data. The moment you click on this, we've built some pretty neat visualizations, are you so able now to it's time to save hear them the in our sound, Tableau public profile. From the there, voice, you can share them and video? embed them in other websites and blogs. First, I need to decide which of my worksheets, Video की आवाज आ रही है ना? हाँ, perfect. dashboards, or stories I want to display as the first thing people see when they look at this viz on my Tableau public profile. Whichever tab is active, when I save the file, will be the first viz they see, but don't worry, you won't lose the other visualizations. The workbook that you upload to Tableau Public will contain all of the other tabs that you have open too. I might also want to do a final check to make sure I don't have any items selected or any active filters, as the visualization will be published exactly as it is here. And if everything looks good, I go to File, Save to Tableau Public As. And if you're using Tableau Desktop Personal or Professional editions, for you, this option will be in the So people who are using desktop wala option, they will see this option server. server menu. If I'm not already logged in, it will prompt me to log in. In this case, I am. And I need to give the viz a good name, which I've already gone ahead and filled in. I'm going to click Save, and Tableau will now upload the entire workbook to the server. The browser will open up and take me to a confirmation page. And this is going to show me what the viz looks like on the web when it shows up in my Tableau public profile. From here, there are a number of things that you can do by clicking the Edit Details button. If I hadn't already given it a good name, I can change the name here. I can include additional information in the description. It'll make it a little bit easier for people to find my viz later. And if I want to have the viz appear in a lightbox above my website, I can add a URL here as well. Control of the toolbar will display allow download. You can show your author profile link, and you can allow undo, redo, and revert here. And lastly, you have the opportunity to set your workbook sheets to show as tabs on top of your viz. If I activate this and click Save here, I can see all of the sheets and dashboards of my vizes that had not been set to hidden in my workbook.
From the Viz's toolbar, if I'm ready to share, I can click Share here and either click the link and put that into an email, or if I take the embed code, I can copy that and post it into a website. Another thing that I can do once I've published my Viz is go back to my profile, clicking this profile button up here, and the Viz will appear as a preview icon. This icon in the upper right-hand corner will let me display, hide, or show the Viz on my profile page. So if I click the icon and it's lit up, that means that any visitors to my profile will not see that visualization. And finally, I can also delete the workbook for the profile should I decide that I don't need it anymore, just simply by clicking the trash can icon. Thank you for watching this video on saving your Vizes to the web. Stay tuned for the next video in the how-to series of it. All right. So my recommendation to everyone, you just need to watch one video, and you know that one video will just give me a second. Let me show you that video. Okay, not this one. That's a 25-minute video that you just need to watch to understand the full capabilities of the Tableau. Let me just go ahead and share that particular link. Right. Click on resource, click on learn. Okay. Get Tableau getting started. And you just need to watch this video, which is this getting started, right? So I'm just sending you this link in your chat box, right? To enter your details, right, or sign in. I think it will allow me to sign in. So when you sign in, you just need to watch this 25-minute video to understand the full capabilities of Tableau. Right? Any question before I wrap up the session? So how is your project going on? Let me ask this question. Project की क्या condition है? Let me share this file first. Project. Hello, people. Do you know in the next week you need to present your project? Amit, Mohit, Naveen, Nishkarsh. Okay. All right. हाँ जो भी आप लोगों ने किया है, right? So good luck. See you next week with your projects. I will be sharing this Word file with you for practice purpose, right? Thank you very much for joining in. Stay safe, stay healthy.